जो तुत्सीज वहां रह रहे थे रुवांडा के अंदर, उनको अक्यूज किया कि तुम इनसे मिले हुए हो, तभी तुमने इनको इनवाइट किया है युगांडा से यहाँ पर रुवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट। So hello students and welcome to another lecture, and the topic of this lecture is Rwandan genocide. Rwanda is a country in African continent. It's an African country and it had witnessed a brutal genocide of one community. And this was even facilitated by Rwanda radio, which was very famous. बड़ा famous है और उसकी बड़ी मिसाल दी जाती है, उसको एज अ प्रोवर्ब भी यूज किया जाता है, रेडियो रवांडा, क्योंकि रेडियो रवांडा ने इतनी ज्यादा हेट्रेड फैला दी थी और इतनी जबरदस्त सिविल वॉर हो गई थी उसकी वजह से रवांडा के अंदर। सो लेट अस सी कि रवांडा में जीनोसाइड हुआ क्या था। During the 1994 Rwandan genocide, also known as the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, members of the Hutu ethnic majority in the east central African nation of Rwanda murdered as many as 8 lakh people, mostly of the Tutsi minority. So Tutsi minority का नरसंहार हुआ और किसने किया? Hutu community ने किया. Hutu had killed 8 lakh Tutsi minority, started by Hutu nationalists in the capital of Kigali. The genocide spread throughout the country with shocking speed and brutality, as ordinary citizens were incited by local officials and the Hutu power government to take up arms against their neighbors. By the time the Tutsi-led Rwandese Patriotic Front gained control of the country through a military offensive in early July, hundreds of thousands of Rwandans were dead and 2 million refugees, mainly Hutus, fled Rwanda, exacerbating what had already become a full-blown humanitarian crisis. So, who started it? किसने स्टार्ट किया इसको? Hutu nationalist ने स्टार्ट किया। देखिए, एक नेशनलिज्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, आपको आपकी कंट्री से, आपकी लैंड से जोड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो माइनॉरिटीज हैं आप उनको उनका नरसंहार शुरू कर दें, उनकी तरफ नफरत की भावना उत्पन्न हो जाए, आपको नेशनलिज्म। दिस इज नॉट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कम्स व्हेन यू क्रिएट अ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी से नेशनलिज्म और स्ट्रेंथन होता है। अगर आप ये कहें कि ये माइनॉरिटी है एंड ही डज नॉट बिलोंग टू आवर लैंड, तो ये सब नेशनलिज्म में इंक्लूडेड नहीं। दिस इज अगेंस्ट नेशनलिज्म। In the capital of Kigali, the genocide spread throughout the country with shocking speed and brutality, as ordinary citizens were incited by local officials. Local officials जो थे वहां पर, वो इंसाइट किए गए थे। किसने? ऑर्डिनरी पीपल को इंसाइट किया, उनको प्रोवोक किया, आप करो, ठीक है। एंड द हुतू पावर गवर्नमेंट टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट देयर नेबर्स. By the time the Tutsi-led Rwandese Patriotic Front gained control of the country through a military offensive in early July, hundreds of thousands of Rwandans were dead and 2 million refugees, mainly Hutus, fled Rwanda, exacerbating what had already become a full-blown humanitarian crisis. Okay, तो Hutus को फाइनली किसको, जो मेजॉरिटी थी उन्हें कंट्री छोड़ना पड़ा, क्योंकि लास्ट में आके जो मिलिट्री ऑफेंसिव था ना, तुत्सी लेड रवांडीज पेट्रियोटिक फ्रंट, वो राइज अप कर गया था, और जब उसने मारना शुरू किया तो वो सब भाग गए। Rwandan ethnic tensions by the early 1990s, ये कब हुआ था? 1994 में हुआ था। तो अब ये स्टार्ट कहां से हुआ? ये नफरत एकदम से तो नहीं होती है। By the early 1990s, Rwanda, a small country with an overwhelmingly agricultural economy, had one of the highest population densities in Africa. About 85% of its population was Hutu. The rest were Tutsi, along with a small number of Twa, a pygmy group who were the original inhabitants of Rwanda. देखिए, यहां पर एक छोटा सा एक और ग्रुप था, तुआ करके, और ये पिग्मी ग्रुप था, और ये इंडिजिनस लोग थे एक्चुअली यहां के, रवांडा के। लेकिन हुतूज आ गए और तुत्सी आ गए, और उन दोनों में हुतूज ने 85% पॉपुलेशन कंपोज कर ली थी। पार्ट ऑफ जर्मन ईस्ट अफ्रीका, from 1897 to 1918, Rwanda became
a Belgian trusteeship under a League of Nations mandate after First World War along with neighboring Burundi. ऐसा होता था कि देखिए ट्रस्टीशिप स्टेट कैसे होती है कि लुक आफ्टर करने वाला कोई और कंट्री है। जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती तो किसी को ट्रस्ट, जब हम काइंड्स ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ में तो आपकी समझ में आ जाएगा कि रवांडा बिकेम अ बेल्जियन ट्रस्टीशिप अंडर अ लीग ऑफ नेशंस मैंडेट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर along with neighboring Burundi. Rwanda's colonial period Rwanda's colonial period, during which the ruling Belgians favored the minority Tutsis over the Hutus, exacerbated the tendency of the few to oppress the many, creating a legacy of tension that exploded into violence even before Rwanda gained its independence. तो बेल्जियन रूल कर रहे थे, ये बेल्जियन की कॉलोनी थी रुआंडा, और रुआंडा में जो माइनॉरिटी तुत्सीज थे उनको फेवर करती थी, यहां की गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवर करती थी, और हुतूस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। उसने ये भावना उत्पन्न कर दी और लेगेसी ऑफ टेंशन क्रिएट हो गई। ठीक है, अ हुतू रेवोल्यूशन in 1959 forced as many as 330,000 Tutsis to flee the country, making them even smaller minority. तो हुतू में रेवोल्यूशन आया था 1959 में, और उसने 3,30,000 तुत्सीज को बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो माइनॉरिटी हो गए थे। By early 1961, victorious Hutus had forced Rwanda's Tutsi monarch into exile and declared the country a republic. और हुतूज ने 1961 में तुत्सी के जो मोनार्क था उसको एग्जाइल में भेज दिया और उसको एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर अ यूनाइटेड नेशंस रेफरेंडम दैट सेम ईयर बेल्जियम ऑफिशियली ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू रुवांडा इन जुलाई 1962, और 1962 में बेल्जियम से उसको आजादी मिल गई और वो इंडिपेंडेंट नेशन हो गया। एथनिकली मोटिवेटेड वायलेंस कंटिन्यूड इन द इयर्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। इन 1973 a military group installed Major General Juvenal Habyarimana, a moderate Hutu, in power. The sole leader of the Rwandan government for the next 2 decades, Habyarimana founded a new political party, the National Revolutionary Movement for Development. He was elected president under a new constitution ratified in 1978 and re-elected in 1983 and 1988 when he was the sole candidate. तो हुतूज ने क्या किया, अपना एक आदमी सामने लेकर आए और उसको, वो मॉडरेट हुतू था, कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, उसको उसने एक नई पार्टी बनाई, नेशनल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर डेवलपमेंट, और उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन एंडोर्स हुआ 1978 में, और उसका इलेक्शन हुआ, दोबारा इलेक्ट होकर आया 1983 में, फिर 1988 में फिर दोबारा जो है वो इलेक्ट होकर आया एज अ सोल कैंडिडेट। इन 1990 फोर्सेस ऑफ द रुवांडीज पेट्रियोटिक फ्रंट, ये तुत्सीज की थी, consisting mainly of Tutsi refugees, invaded Rwanda from Uganda. तो ये इन्होंने 1990 में इन्वेड कर दिया रुवांडा, युगांडा से आ गई ये रुवांडा में। Habyarimana accused Tutsi residents of being RPF accomplices and arrested hundreds of them. और हबियारिमाना ने क्या किया कि उन्होंने कहा जो तुत्सीज वहां रह रहे थे रुवांडा के अंदर, उनको अक्यूज किया कि तुम इनसे मिले हुए हो, तभी तुमने इनको इनवाइट किया है युगांडा से, यहाँ पर रुवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट वालों ने यहाँ पर ये जो तुत्सी की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है कि इसलिए इन्वाइट किया क्योंकि यहाँ जो माइनॉरिटीज तुत्सी रह रहे हैं उन लोगों ने इनको बुलाया, ये सब मिले हुए हैं। तो उन लोगों ने, इसने क्या किया हबियारिमाना ने कि hundreds of Tutsis को अरेस्ट कर लिया। A ceasefire in these hostilities led to negotiations between the government and the RPF in 1992. फिर एक ceasefire हो गया दोनों के बीच में 1992 में, resulting in the Arusha Peace Accords. In August 1993, Habyarimana signed an agreement at Arusha, Tanzania, calling for the creation of transition government that would include the RPF. ठीक है, आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाइए। दिस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट एंगर्ड हुतू एक्सट्रीमिस्ट को बहुत गुस्सा आया इस बात के ऊपर और उन्होंने हॉरिबल एक्शन ले लिया, और यहां पर स्टार्ट हुआ रवांडन जेनोसाइड। April 6, 1994, a plane carrying Habyarimana and Burundi's president Cyprian Ntaryamira was shot down over the capital city of Kigali, leaving no survivors. और इसमें एक्सट्रीमिस्ट ने हबियारिमाना को भी मार दिया और बुरुंडी के प्रेसिडेंट जो थे सेप्रेस उनको भी मार दिया। ओके, सिप्रियन, उनको भी मार दिया। दिस हिज नेम इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस।
Okay, so I'm taking his first name, Cyprian. It has never been conclusively determined who the culprits were. Some have blamed Hutu extremists while others blame leaders of the RPF. Within an hour of the plane crash, एक घंटे के अंदर presidential guard together with members of the Rwandan armed forces and Hutu militia groups known as the uh, Interhamwe, those who attack together. This is their local language, okay? Those who attack together, and Umpuzamugambi, those who have the same goal, set up roadblocks and barricades and began slaughtering Tutsis and moderates Hutus with impunities. Okay, among the देखिए Hutus ने भी जो moderate थे उनको भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया extremist Hutus ने. Among the first victims of the genocide were the moderate Hutu Prime Minister Agathe Uwilingiyamana and 10 Belgian peacekeepers killed on April 7. This violence created अब देखिए हुतू के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको भी मार दिया, अब 10 बेल्जियन पीसकीपर्स को भी मार दिया. पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया इस वायलेंस की वजह से. इंटरिम गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट हुतू पावर की लीडर्स की फॉर्म हो गई अप्रैल 9 को. Killing of the Belgian peacekeepers meanwhile provoked the withdrawal of Belgian troops and the UN directed the peacekeepers only defend themselves thereafter. और बेल्जियन ने भी विड्रॉ कर लिया कि हमें क्या मतलब है, दूसरा कंट्री है, वैसे भी आप मरिए, हम कुछ इसको फर्दर आगे नहीं ले जाएंगे. Slaughter spreads across Rwanda. The mass killings in Kigali quickly spread from that city to the rest of Rwanda. In the first 2 weeks, local administrators in central and southern Rwanda, where most Tutsi lived, resisted the genocide. After April 18, national officials removed the resistors and killed several of them. Other opponents then fell silent or actively led the killing. Officials rewarded killers with food, drink, drugs, and money. Government-sponsored radio stations started. ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है. Government sponsored radio stations started calling on ordinary Rwandan civilians to murder their neighbors. मारो पकड़ के. ऐसा ऐसा रेडियो वाले मीडिया कह रही थी, सोचिए. Within 3 months, some 8 lakh people had been slaughtered. Meanwhile, the RPF resumed fighting and civil war raged alongside the genocide. By early July, RPF forces had gained control over most of the country, including Kigali. Okay. So, let us look at what was the international response. देखिए वो सब तो हो गया, एक हमें एक बैकग्राउंड समझ में आ गया, उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. हुतीज और तुत्सीज, एक्सट्रीमिस्ट हुतीज वर्सेस माइनॉरिटी तुत्सीज, ये था जहां पर जो हेट्रेड थी वो किसने फ्यूल करी है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मीडिया रेडियो रवांडा ने, तो उसकी वजह से हुआ. अब इंटरनेशनल रिस्पांस देखते हैं. एज इन द केस ऑफ atrocities committed in the former Yugoslavia around the same time, the international community largely remained on the sidelines during the Rwandan genocide. Okay, यहां पर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी साइडलाइन रही. अभी 76 ईयर्स से पैलेस्टीन के इशू पे साइडलाइन है, यहां पर भी साइडलाइन रही. ओके, UN Security Council vote in 1994 led to the withdrawal of most of a UN peacekeeping operations created the previous fall to 8 with government transition under the Arusha Accord. और UN Security Council में वोट हुआ कि हम UN peacekeeping forces withdraw कर लेंगे, तो उन्होंने withdraw कर ली. Okay, as reports of the genocide spread, the Security Council voted in mid-May to supply a more robust force, including more than 5,000 troops. By the time that force arrived in full, however, the genocide had been over for months. In a separate French intervention approved by the UN, French troops entered Rwanda from Zaire in late June. In the face of the RPF's rapid advance, they limited their intervention to a humanitarian zone set up in southwestern Rwanda, saving tens of thousands of Tutsi lives, but also helping some of the genocide's plotters, allies of the French during the Habyarimana administration, to escape. Now, French troops intervened and they saved thousands of lives, Tutsi lives. But, you say that they also, restricted themselves to the humanitarian zones. In the aftermath of the Rwandan genocide, many prominent figures in the international community lamented the outside world's general obliviousness to the situation and its failure to act in order to prevent the atrocities. As former UN Secretary General Boutros Ghali, you told the PBS news program Frontline, the failure of Rwanda is 10 times greater than the failure of Yugoslavia, because in Yugoslavia, the international community was involved. In Rwanda, nobody was interested.
So attempts were later made to rectify this passivity. After the RPF victory, the UNAMIR operation was brought back up to strength. It remained in Rwanda until March 1996 as one of the largest humanitarian relief efforts in history. And in September 1998, the International Criminal Tribunal for Rwanda issued the first conviction for genocide after a trial, declaring Jean-Paul Ekayesu guilty for acts he engaged in and oversaw as mayor of the Rwandan town of Taba. Rwandan genocide trials में in October 1994, the International Criminal Tribunal for Rwanda, located in Tanzania, was established as an extension for the ICT for the former Yugoslavia. International Criminal Tribunal for Yugoslavia जो establish हुआ था, उसी को extend कर दिया रवांडा में, तंजानिया में. At The Hague, the first international tribunal since the Nuremberg trials of 1945-46 and the first with which the mandate to prosecute the crime of genocide. पहला genocide जब punish हुआ है, try हुआ है, वो इसमें हुआ है. 1995, the ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda, began indicting and trying a number of higher ranking people for their role in the Rwandan genocide. The process was made more difficult because the whereabouts of many suspects were unknown. So, the trials continued over the next decade and a half, including the 2008 conviction of 3 former senior Rwandan defense and military officials for organizing the genocide. So that's all about Rwandan genocide, and I again request you to kindly scan this and subscribe to the YouTube channel of the Paathshala classes. Thank you.